Hello student, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, December grade 1. Myself Durga Prasad of your science teacher. And today we discuss about the first chapter of science, that is matter in our surroundings. So first of all, we know that what is the matter? What is the matter? Anything that occupies space. Anything that occupies space and has mass is called matter. What is the matter? Anything that occupies space and has mass is called matter. Then what is the matter? जिसके पास कुछ स्पेस हो, कुछ ऑक्यूपाइड स्पेस हो और उसका अपना मास हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे अपन? मैटर बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं इसी में, तो इट एग्जिस्ट, ये कहां हो सकता है? इट एग्जिस्ट in the form of five basic elements. The Panchtattva, that is air, earth, fire, sky and water. It exists in the form of five basic elements, that is called the Panchtattva, that is air, earth, fire, sky and water. कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट है अपना वो कहाँ का फॉर्म हो सकता है, तो ये पांच जगह फॉर्म हो सकता है, इसको अपन पंचतत्व बोलते हैं. दैट इज एयर में हो सकता है, अर्थ के ऊपर मैटर हो सकता है, फायर में फॉर्म हो सकता है, स्काई में फॉर्म हो सकता है, वाटर में फॉर्म हो सकता है. ठीक है, एग्जांपल की बात करूं मैं, दैट इज चेयर. मैं चेयर की बात करूं तो चेयर भी है वो एक मैटर से फॉर्म होता है. क्यों मैटर? चेयर के पास क्या होती है? एक मास होता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं बेड के पास भी क्या होता है? मास होता है. मैं बात करूं रिवर में भी क्या होता है? मास होता है. मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल माउंटेन, उसके पास भी क्या होता है? एक स्पेस होता है. मैं बात करूं एक मास होता है. कुछ एनिमल्स मान लो आप, डॉग मान लो, ट्रीज है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. ठीक है, इसको कंप्लीट क्या हो गए? मैटर्स हो गए. तो व्हाट इज द मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, ये मैटर वो कहाँ फॉर्म हो सकते हैं, तो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट, the Panchtattva, and that is air, earth, fire, sky, water. Okay, example की बात करूँ मैं, चेयर, बेड, रिवर, माउंटेन, डॉग, ट्रीज, बिल्डिंग एक्सेट्रा, बहुत सारे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ मैं इसी में, नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. मैटर के बारे में हमने पढ़ लिया कि मैटर के पास क्या होता है? ऑक्यूपाइड स्पेस होगा और इसके पास कुछ मासेस होंगे, और ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं? पंचतत्व हमने बोला था, जो था एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. एग्जांपल भी हमने देख लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो मैं बताऊं. तो फर्स्ट जो पॉइंट होगा अपना वो होगा मैटर is made up of small particles called atom. फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. जो मैटर्स होते हैं अपने वो स्मॉल पार्टिकल्स से फॉर्म होंगे.
जी में क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, these particles are too small to be observed with eyes। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, या टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद आईज, और आईज में जैसे नेक्ड आईज। इन पार्टिकल्स को अपन जो इनके ऊपर एटम्स बोल रहे थे, उनको अपन नेक्ड आईज से ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली से। नेक्स्ट है, these particles are constantly moving these particles are constantly moving। इट मीन्स जो पार्टिकल्स था वो कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट जो इसका है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, these particles have space between them। जो पार्टिकल्स अपन ले रहे हैं, या फिर पार्टिकल्स से जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, जो मैटर फॉर्म हो रहा है, ओके, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था चेयर, तो चेयर जब बनती है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पेस होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं, एक नोट जो आपको कंटिन्यू अपने नोटबुक में राइट करते रहना। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, particles of matter attract each other because of the force of attraction। जो पार्टिकल्स है, these particles of matter attract each other, why? Because of the force of attraction। और क्लास ये दो पॉइंट हो गए अपने। फर्स्ट पॉइंट था अपना मैटर के बारे में, व्हाट इज द मैटर। सेकंड है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मैटर के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि मैटर्स है वो इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यू नो। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट these particles are too small to be observed with naked eyes, and third point is these particles are constantly moving, and the fourth point is these particles have space between them, and the last characteristic of matter is particles of matter attract each other, why? Because of the force of attraction। Yes, now next heading is diffusion। next heading is diffusion। What is the diffusion? Actually, particles of matter intermix on their own with each other, and they do so by getting into the space between the particles, and this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। Then what is diffusion? Particles of matter intermix on their own with each other, they do so by getting into the spaces
between the particles and this intermixing of particles of two different this is important, two different of matter on their on is called diffusion. Is called diffusion. Then what is the diffusion? Particles of matter intermixing or their on with each other, and they do so by getting into the space between the particles, and this intermixing of particles of two different types of matter on their on is called diffusion. नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिफ्यूजन के क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी अपनी, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन।